हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है। बतारीख 14 सितंबर बरोज़ हफ्ते को हैदराबाद में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान खुसूसी खिताब में हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि जियो 99 का क़याम रेज़ोल्यूशन के ज़रिए किया गया था। इन्होंने वाज़ेह किया कि ये दावा करना गलत है कि एजेंसी की कानूनी हैसियत नहीं है। इन्होंने कहा कि माजी में भी कई सारे कानूनी इदारे एक एग्जीक्यूटिव रेज़ोल्यूशन के ज़रिए बनाए गए थे, जिसे मार्च 1950 में तश्कील पाने वाले प्लानिंग कमीशन, काबीना सेक्रेटरीट, लॉ कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस और एनफोर्समेंट सिर्फ चंद एक के नाम हैं। इन्होंने कहा कि पानी, ज़मीन, दरख्त, वाल्टा एक्ट, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, आबपाशी एक्ट वगैरह से लेकर मुख्तलिफ एक्ट के तहत हाइड्रा को इख्तियारात सौंपे गए हैं। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल इसके लिए होमवर्क जारी है और ये कि पॉलिसी दस्तावेज़ तैयार होने के बाद इसे काबीना की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर काबीना की करारदाद मंजूर होने के 6 हफ्तों के अंदर कानून साज असम्बली में ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा। ये एक ऐसे वक्त में सामने आया जब तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है, जिसके हाइड्रा में तामीरात को मुनहदिम करने में कानूनी इख्तियारात पर सवालिया निशान लगाया गया है। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। हाइड्रा అనేది ఒకటి కొత్తగా కాన్స్టిట్యూట్ అయిన బాడీ ఒకటి. This is acronym for Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency. So దీని గురించి already enough of this thing has come in the media and also in various other social media also. I think దాని it's constituted by an executive ఒక జియో ద్వారా వచ్చింది. This is GOMS number 99 అని చెప్పేసి 2024 July 19th రోజున this was GO was issued. But executive resolution or an executive order తో వచ్చినది కూడా it's definitely that's also in ఒక లీగల్ ఏజెన్సీగానే ఉంటుంది. టుడే somebody has challenged in the high court whether Hydra is legal or not అనేది. So it's a legal entity definitely, because lot of bodies were floated through executive resolution. Like for instance planning commission 1950 March lo that was constituted through an executive resolution. Cabinet secretariat, law commission, మన స్టేట్లో కూడా చాలా బాడీస్ వర్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ త్రూ ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఆర్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ లైక్ ACB, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, వాట్ నాట్ ఇదంతా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ లీగల్ ఇష్యూస్ అపార్ట్. షార్ట్లీ దే ఇస్ అన్ ఆర్డినెన్స్ విచ్ ఈస్ లైక్లీ టు కమ్ అప్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ సో. దానికి కావాల్సినటువంటి హోంవర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. సో పవర్స్ అండర్ వేరియస్ యాక్ట్స్ విల్ బీ డెలిగేటెడ్ ఆన్ టు హైడ్రా. ఆర్డినెన్స్కి అంటే దానికి ఫస్ట్ కొంత ఇట్ ఈస్ ప్రిసిడెడ్ బై సమ్ ఇప్పుడు వాల్టా కిందో, లేకపోతే ఒక మున్సిపల్ యాక్ట్ కిందో, లేకపోతే GHMC యాక్ట్ కిందో, ఇట్లా ఇరిగేషన్ యాక్ట్ కిందో, ఇట్లా రకరకాల యాక్ట్స్ కింద ఆ పవర్స్ని డెలిగేట్ చేయడానికి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ బీయింగ్ టేకెన్. అండ్ తర్వాత ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ కింద వన్స్ ఇట్ గెట్స్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ ద క్యాబినెట్, దెన్ అన్ ఆర్డినెన్స్ విల్ బీ ఫార్ములేటెడ్. ఆర్డినెన్స్ తర్వాత న్యాచురలీ నెక్స్ట్ అంటే అసెంబ్లీ సెషన్లో within 6 weeks it has to be passed as a legislation. So that's how the general ఇది ఉంటుంది కాబట్టి. But this apart, I mean, see, we are mainly into two main issues. One is the disaster management or the disaster response, whatever you call, and the other one is the asset protection. So disaster management per se has మనం జనరల్గా మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ చిన్న వర్షానికి కూడా మన హైదరాబాద్లో టోటల్ యూ గెట్
lot of flooding, and roads are totally heavily waterlogged, and you have many, almost in Hyderabad city only, ante utti Hyderabad commissionerate lo I know more than 141 waterlogging points unnai, serious waterlogging points. So innunnai, and inundated identity low lying areas kuda almost around 343 areas unnai anamata mottham manaki GHMC area. So much of inundation and so much of waterlogging iyanni undi deento a lot of traffic issues, and the whole city goes for a toss. ఇదంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం, చాలా రోజుల నుంచి కూడా చూస్తూ ఇష్యూస్ అన్నీ ఉంటే దీని నుంచి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నౌ కమ్ అవుట్ విత్ దిస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ హైడ్రా, precisely to address the aspects of disaster management and also asset protection. Asset protection is we take care of assets like public assets, government assets, like number one is the lakes, two is nalas, and government lands, parks, and even in the layouts also we have a lot of public spaces, right, which are meant for public use, like probably some common facilities like buildings or like a club house or whatever, some school కోసం ఇయర్ మార్క్ చేసిన ప్లేస్, రోడ్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఈవెన్ ట్రాఫిక్ రిలేటెడ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ఆల్ విత్ ఇన్ అవర్ డొమైన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇదంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద జియో వీఆర్ నౌ వీ డు నాట్ ఇష్యూ ఎనీ నోటీసెస్. సో లెట్ దిస్ బి వెరీ క్లియర్. హైడ్రా నోటీసులు ఇచ్చింది అని చెప్పి వస్తుంటుంది, ఎక్కడ కూడా మేము నోటీస్ ఎక్కడ ఉండదు. ख़वातीन आम तौर पर सेहत के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वक्त मुकर्ररा पर इलाज व मुआवजा न होने से मर्ज़ मज़ीद पेचीदा हो जाता है और मसाइल पैदा होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में ख़वातीन की अहमियत मुसल्लिमा है। अगर खानादार ख़ातून बीमार हो जाती है तो सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। ख़ातून की सेहत का असर बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सुबह से शाम तक ख़वातीन घरेलू कामकाज में मसरूफ़ रहती है। इस दौरान वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती और सेहत का कुछ मसला दरपेश हो जाए तो सर्द मोहरी का मुजाहरा करती है और डॉक्टर से रुजू होने से इज्तिनाब करती है। ऐसे हालात में बाज़ औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं। ख़वातीन की सेहत से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ मुफ्त इलाज व मुआवजे की सहूलत के लिए मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब से एक खुसूसी पेशकश की गई है। दवाखाने की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन के लिए 2 माह पर मुश्तमिल सेहत बेदारी मुहिम मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिल्लर नंबर 254 राजेंद्र नगर पर चलाई जाएगी, जिसका आगाज़ 10 सितंबर से होगा जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। चेयरपर्सन मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर सहीबा शकूर माहिर अमराज नीसवा ने बताया कि ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ इलाज व मुआवजे की सहूलत की फराहमी के लिए मज़कूरा बाला अस्पताल में मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद का फैसला किया गया है। मेडिकल कैंप में नौज़ायदा लड़की से लेकर मुअम्मर खातून की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी। पैदाइशी तौर पर कमज़ोर लड़कियों के अलावा हर उम्र की लड़कियों और ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुताल्लिक़ मुफ्त तशख़ीस माहिरीन अमराज नीसवा करेंगी। इस मुफ्त सेहत बेदारी कैंप के दौरान नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के मसाइल जैसे चेहरों पर बालों का आ जाना, माहवारी की शिकायत, दौरान हमल आंवल का नीचे आ जाना, बच्चेदानी में सेट का होना, शुगर, बीपी, बांझपन के अलावा ब्रेस्ट कैंसर, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, अमराज जिल्द से मुतासरा लड़कियों और ख़वातीन का इलाज, शादी से क़ब्ल लड़कियों को ऐनकों से निजात, आँखों का तिरछापन और दीगर अमराज का इंतहाई कम शरह पर इलाज किया जाएगा। लेडी डॉक्टर्स के अलावा लेडी सर्जन की खिदमात हासिल रहेंगी। डॉक्टरों से मुशावरत बिल्कुल मुफ्त रहेगी। टेस्टों पर 20% की रियायत दी जाएगी और अद्वियात पर 10% की छूट रहेगी। इस मौके पर मीना हेल्थ कार्ड भी दस्तियाब रहेगा, जिसकी मुद्दत 2 साल रहेगी। तमाम शोबेजात में दवाखाने में माहिर लेडी डॉक्टर्स की खिदमात हासिल रहेगी। ख़वातीन व लड़कियों से कसीर तादाद में इस्तेफादा की ख्वाहिश की गई है। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,